Good morning, class 12 students. We are doing the chapter semiconductor devices where we discussed about the basic, what is a semiconductor, how we produce a semiconductor, extrinsic semiconductor, what is dopant, and then we discussed about what is p-n junction, how a barrier potential is created, and how we can connect, how a p-n junction is converted into p-n junction diode, and in what ways we can connect a p-n junction diode to a circuit, that is forward bias and reverse bias. Then we discussed about forward bias characteristics and reverse bias characteristics. In this video, we will discuss about basic application of the diodes. Okay. सबसे पहला, diode can be used as rectifier. Okay. The diode as rectifier. Now, what is a rectifier? We are studying the page number 10. Okay. How a diode can use as rectifier? Now, what is a rectifier? For example, if I talk about a block diagram, this is a rectifier. This is a AC. Where the polarity is changing plus to minus. If this AC is converted into like this, no change in polarity. That means the AC is converted into DC, and this conversion is done by rectifier, and this process is called as rectification. So diode can be used to make rectifier, so to convert AC into DC. Okay. Now which principle help the diode to work like rectifier? The principle is that diode is a unidirectional device. That is, it can conduct only in one direction. It cannot conduct in both the directions. Okay, this we know. Towards the arrow only it can conduct. Now, under this we have two types of rectifier. One is called as half wave rectifier. Another is called as full wave rectifier. Half wave rectifier means what? Only one of the half cycle. There are two half cycles in AC. Only one half cycle can be rectified. The other half cycle, there is no output. Okay. Only the positive half cycle, there is an output in form of DC. Negative, there is no output. That we'll discuss here. Let's talk about our first circuit diagram. Okay. Now, we know diode is a current sensitive device. That means if we apply a higher potential to the diode, more current will flow. And what will happen to the diode? Diode will damage. So first of all, the AC which you need to rectify is undergo a step down transformer. Now this is a step down transformer. Why we applied a step down transformer? So the voltage can decrease. Clear? Voltage decreases so the diode does not get damaged. Now we connect a diode here, and the output we can get across a load resistance RL. Okay. In the book, what is written, I don't know. It is written as R, no problem. Take it as R, take it as RL, no issue. Okay? Could be later. So this is called load resistance. Load resistance is what? यहाँ से जो output निकलेगा, कैसे पता चलेगा that the output is coming out or not? Okay. To identify that output, we connect a resistance known as load resistance. Okay. Now what will happen? This is the input voltage. Okay. And this is the output voltage. This is the input voltage. That is the AC which we have applied. And this is the output voltage. We have to see how the output voltage is coming. See, try to understand very nicely. And it's very easy. It's not a big issue. Okay. Now how it works, how to rectify, how to stop the change in polarity. Only that we need to understand. Change in polarity को रोक देगा तो वो DC बन गया. Now DC cannot be always a straight line. This is in current electricity chapter. In current electricity chapter, we say that this is also a DC because there is no change in polarity. But this is a variable DC. This is the. If I say about a pure DC, then this is the pure DC where the current is also constant. So DC means there should not be any change in polarity. That should be the aim, only aim. That there should not be any change in polarity, class. Clear? There should not be any change in polarity. Let me change the focus so that it comes in board. Okay. Now see. First, during positive half cycle. During the positive half cycle of the input AC. Okay. Now we know how a transformer works. ये सब हमने पढ़ा हुआ पहले से. क्या होता है जब यहां से चेंजिंग करंट फ्लो करेगा तो चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. That changing flux is linked with here. That means here induced EMF is produced, right, due to mutual induction. And this mutual induction undergoes Faraday's law of electromagnetism,
and that follows Lenz's law. Okay, since that follows Lenz's law, so what happens? During positive half cycle, for example, this is minus and this is plus. Okay, let's say this is minus and this is plus. If this is minus and this is plus, then the induced EMF will be opposite, plus and minus. You understand why they are minus, plus, plus, minus? Because of the induced EMF Lenz follow, it opposes the cause, opposite produce hota hai EMF. Okay, now see. So during positive half cycle, like this is the primary coil, this is the secondary coil, this is P1 and P2, and this is S1 and S2. S1 is positive and S2 is negative. So when S1 is positive and S2 is negative, see, the plus of the diode is connected with plus and the minus of the diode is connected with minus. That means the diode is forward biased. That means the current will flow like this. That means whatever the current is flowing here in input AC, the same current will flow from the output also. The same way. Okay. Now during negative half cycle, this is happening in the positive half cycle. During negative half cycle, what will happen? During negative half cycle, the S1 will become negative, the S2 will become positive. Okay, you don't need to worry about this part. वो समझ में आ गया, ये प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस और प्लस होगा, ठीक है? During negative half cycle, what will happen? This one S1 will be negative and S2 will be positive. The induced EMF is produced in such a way that this is negative and this is positive. So now the diode is reverse biased. That means no conduction of current. That means when the negative half cycle flow, there is no current in the output. देखो मैंने क्या किया, चेंज इन पोलैरिटी को रोक दिया, आउटपुट से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगेन देयर इज अ करंट फ्लो, अगेन zero current. So what is happening? See, the output which we got, it has only positive cycles. There is no negative cycle. The negative cycle मैंने stop कर दिया. So the AC is converted into DC. This is the job. That's all. Okay. Now, but the AC which we got, which we converted into DC, is this DC is the actual DC? No. This is a fluctuating DC. This is the disadvantage of half-wave rectifier. That the DC is fluctuating. The next disadvantage is that it cannot convert both the cycles. It can convert only the positive cycles. That means the efficiency is low. Okay, that's what we have now. Next is full wave rectifier. See, the explanation is not much. The writing part is more. Again, we will first the AC which we need to convert, we will apply it in a step down transformer. It should be always step down only. I hope you understand why step down. Voltage घटा देंगे so the diode does not damage. Okay, now we will have two diodes. One is D1, another is D2. Okay, and we will connect a load here. This is the load resistance, and the output we will get it from here, V0. The output we will get it here, V0. So we can say this is V0 and this is Vi, the input potential. Okay, now what will happen? That this is the input. And here we will draw the output. Okay. Again, during positive half cycle, S1 and S2, the induced EMF is produced in such a way that this is positive and this is negative. So what will happen? D1 is connected with P of the D1. The positive side of D1 is connected with plus, but the positive side of D2 is connected with minus. That means D2 is reverse bias, D1 is forward bias. That means D1 will conduct like this. Clear? And whatever the output, whatever the input current flowing, the same way the output current will also flow. Done? Or the output voltage will get like this. The same way. There is no change. Next, during negative half cycle, what will happen? The induced EMF is produced in such a way that this is negative, this is positive. Now D1 is reverse bias and D2 is forward bias. That means the D2 will conduct now like this. पहले D1 ऐसे conduct हो रहा था, अब D2 ऐसे conduct हो रहा है. Now listen very carefully. In both the cycles, plus and minus, the current through load resistance is in same direction. That means for this output, the current will be in upward direction because the current direction is not changing. अगर current direction ऐसे होता, then the output will be in this direction. Because current direction same है, that means पहले load resistance में इस तरह से current flow हो रहा था, output you are getting here. Now also the current is flowing in this direction, the output again I will get it here. Okay, and the same way again point of cycle like this, again negative cycle like this. Done.
So in this way we get a full wave rectifier. Now what is a full wave rectifier? Which convert both the cycles of the AC into DC. Okay, now इसका efficiency more than half a rectifier है because it can convert both the cycles. But again, disadvantage is what? It is a fluctuating DC. Okay, this is a fluctuating DC. Why? The DC should be a constant current, but the current is not constant. Done? Okay, now a small knowledge you need to understand, which is not in your syllabus, is that the fluctuating DC which we got, this is not my aim. My aim is to get a pure DC. Now, how to convert a fluctuating DC into a pure DC? So, एक ये fluctuating DC, इसको मैं एक pure DC में कैसे convert करूँ? That is done by filter circuits. Okay. Now, what is a filter circuit? There are few examples I have told you. And from those examples, I will discuss only one. We have LR circuit, we have LC circuit, RC circuit, okay. RC circuit, LR circuit, मतलब इंडक्टेंस लगा दो लोड रेजिस्टेंस के साथ या तो कैपेसिटर लगा दो लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? प्योर डीसी बन जाएगा. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर मैं इस रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर लगा दूं, अब जो आउटपुट निकलेगा वो ऐसा नहीं ऐसा निकलेगा. These are called as filter circuits. How it works, कैसे काम करता है, that those things are not in the syllabus, so we don't need to worry about those things. Okay, so we only need to understand how to convert a fluctuating AC into a fluctuating DC into a pure DC. That is done by filter circuits. Few examples you understand. Okay, now few notes are written out there in the page number 11. No, disadvantage of half wave rectifier we discussed. Advantages of full wave rectifier we discussed. Disadvantages of half wave rectifier we discussed. Okay, wait. This one mistake class. Disadvantages of node के अंदर disadvantages of half wave rectifier is fine. Okay. Next and third point, disadvantage of full wave rectifier होगा, half wave rectifier नहीं होगा. The output is not pure DC, it is fluctuating DC which contains AC components which can be smoothed by using filter circuit. This is a disadvantage of full wave rectifier. Listen very carefully. Wake up. Don't sleep while watching the videos. It is a full wave rectifier. Okay. Third point under note page number 11. नीचे में जाओ. Now एक और चीज देखना है. Let's talk about the frequencies. Here, if I take this as one time, a time period, a particular time is there. For example, 2 minutes. In this 2 minutes, AC has one cycle. AC का एक साइकिल मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक साइकिल होता है, ठीक है? DC also has only one cycle. ये साइकिल नहीं है. Only positive cycles are called as DC cycles, okay? But in AC, positive and negative together is called as one cycle. In DC, one wave is called as one cycle because it is DC. नेगेटिव वाला हम कंपेयर नहीं करते, तो इसको हम एक साइकिल बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम एक साइकिल बोलेंगे. Now see, in the same time, the AC has also one cycle, the DC has also one cycle. That means the frequency of the output also called as load voltage or load current. लोड से जो करंट जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नाम दे सकते हैं. ओके, वी कैन टेक इट एज लोड करंट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसको बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, लोड करंट वोल्टेज. ओके, सो लोड करंट का जो फ्रीक्वेंसी है और जो एसी इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है सेम. बट क्यों? फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज ओनली वन साइकिल ऑफ एसी एंड वन साइकिल ऑफ डीसी. बट इन चेक आउट द फुल वेव रेक्टिफायर, फ्रॉम हियर टू हियर there is one cycle of AC but two cycle of DC. That means the frequency of output is twice the frequency of input. Frequency of input से twice होगा frequency of output or load current. Do you understand? Plus, so this is all about diode as a rectifier. Now we'll go for some special purpose PN junction diode. Under this we'll go for first page number 13, photodiode, then LED and then solar cell. These are the last three topics in our syllabus. Okay. Okay class, the next topic is photodiode, page number 13. Okay, you will get photodiode. Now what is a photodiode? Okay, these are some special PN junction diodes, special purpose PN junction diodes which are made to do some special jobs. Okay,
Now, what is a photodiode? Photodiode is a special p injection diode which conduct when some light incident on it. Okay, जब लाइट जब गिरता है उसमें सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब लाइट गिरता है, कितना फ्रीक्वेंसी विल डिस्कस अबाउट इट, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट जब गिरेगा उस डायोड में तो वो डायोड कंडक्ट करेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड फोटोडायोड. और ये जो फोटोन्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, ओके, इसको हम बोलेंगे फोटो कंडक्शन. फोटोन्स के कारण करंट आया ना, इसको हम बोलेंगे फोटो कंडक्शन. सबसे पहला चीज तुम्हें याद रखना है, इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड. क्यों, कैसे, एवरीथिंग विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, so photodiode is a special p junction diode which is connected in reverse bias and which conduct on incidence of a photon or light, that is called photodiode. Okay, तो अब इसका सिंबल क्या है? एक सिंपल डायोड जैसा बना दो बट लाइट दिखाओ, ऐसे लाइट गिर रहा है. ओके, और यू कैन शो लाइक दिस आल्सो. एक सर्कल बना दो, लाइट गिर रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोडायोड. लाइट गिरेगा देन इट विल कंडक्ट. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं, किस लिए होता है, किस तरीके से काम करता है? ओके, लिसन वेरी केयरफुली. टेक अ सिंपल p injection diode like this. दिस इज अ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन. ये p है, ये n है. इससे मैंने क्या किया, रिवर्स बायस में लगाया. दैट मींस p इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड n इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव. ठीक है, ओके. जब इसको मैं रिवर्स बायस में लगाऊंगा, सो वी नो due to minority carriers, plus 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 minus minus minus, this is minus, this is plus. Due to minority carriers, there is small amount of reverse current flow. We know this thing. Okay, there is no light. मैंने को light incident नहीं किया. Due to minus, this negative, due to negative repel करेगा point. There is some reverse current flows. तो वो जो reverse current flow होगा वो क्या होगा, वो saturate हो जाएगा ऐसे करके. Okay, so this is called as dark current. क्या बोलते हैं इसको, dark current. Why dark current? Because there is no light incident, but then also this small saturation current flows. Okay, now what we will do, we will allow the light to incident in the depletion layer region. There is a glass window from where the light can incident. Okay, when this light incident, this light will contain some energy, h nu, कुछ एनर्जी होगा. उस एनर्जी के कारण क्या होगा, again bonds will break. If the bonds will break, so then what will happen, electron hole pairs are created. Now these electrons and these holes are called as minority carriers in n region and p region. Minority carriers are produced by thermal excitation, ये मुझे पता है. Okay, now थर्मल एक्साइटेशन के कारण जो माइनॉरिटी carriers प्रोड्यूस होगा उससे कारण ये सैचुरेशन करंट प्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलेंगे डार्क करंट. आई एम नॉट गोइंग टू द रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन. ओके, ब्रेकडाउन तक नहीं जा रहा मैं, ये और जाएगा अगर ब्रेकडाउन कंडीशन पहुंच गया तो, बट वी नॉट डिस्कस अबाउट ब्रेकडाउन कंडीशन फॉर द टाइम बीइंग. वी आर डिस्कस अबाउट ओनली द रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हिच इज फ्लोइंग, दैट इज I naught. नाउ व्हेन आई अलाउ द करंट टू, व्हेन आई अलाउ द लाइट टू इंसिडेंट, नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल ब्रेक द कोवेलेंट bonds that will produce more electron hole pairs. दिस इज कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन. फोटोन्स के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हुए. ठीक है, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स व्हिच आर क्रिएटेड अगेन दे आर कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर्स. व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय डोपिंग. सो फिर से माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस हुआ. ओके, फॉर एग्जांपल सम अमाउंट ऑफ लाइट पे, फॉर एग्जांपल मैंने 4 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देयर आर, पहले इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल था, अब एक्स्ट्रा 4 होल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे. So what will happen? The current will further increase and become saturated. I1. So what is this I naught? This is saturation current. What is this I1? I1 is what? This is again a saturation current, but which increases with light flux. More photons will incident, more electron hole pairs will created, and more saturation current will produce. I2. Where I2 is greater than I1 is greater than I naught. ओके, इसको हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं. इंटेंसिटी बढ़ा, सैचुरेशन करंट भी बढ़ा. ओके, तो वी कैन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्स. इंटेंसिटी ऑफ, वी कैन से लाइट फ्लक्स. लाइट फ्लक्स मतलब क्या, मोर और मोर फोटॉन्स इंसिडेंट. सो मोर और मोर फोटॉन्स विल इंसिडेंट, मोर और मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वर क्रिएटेड एंड मोर और मोर रिवर्स करंट इज इंक्रीजेस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हो गया तुम्हारा V एंड ये हो गया तुम्हारा I. सो in this way a photodiode works. photodiode इस तरीके से काम करता है. क्लियर? तो लाइट गिरेगा और वो photodiode कंडक्ट होगा. Now a very important question is why it is
converted into, why it is in reverse bias? फॉरवर्ड बायस में लगाने के बाद लाइट गिराया तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली. रिवर्स बायस करंट डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी कैरियर्स. और लाइट गिराने के बाद माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस होता है. ओके, नाउ रिवर्स बायस करंट इज वेरी स्मॉल, सो व्हेन वी इंसिडेंट लाइट minority carriers will produce. So that change in current we can see easily, we can observe easily, because already the reverse current is very small. So when I incident the light, more minority carriers produce. The increase in current we can see easily. We can recognize the current change easily. Okay. Next, अगर मैं forward bias में लगाऊं तो forward bias current is due to majority carriers. So majority current carriers के कारण जो current produce होता है वो पहले से ज्यादा वैल्यू होता है. So when I allow the light to incident, now the minority carriers are producing. Majority carriers are not producing. The change we cannot see it nicely. Clear? The note is written very nicely and you have to write in that language only class. Okay, try to understand. समझो चीजों को अच्छे से कि मैं रिवर्स बायस में क्यों लाऊंगा. पहला बात, जो हम फोटोडायोड से जो करंट का बात कर रहे हैं वो रिवर्स करंट है, and reverse current depends on minority carriers. With photon incident, minority carriers produce. Okay, that means the light flux depends on minority carriers, and minority carriers depends on the current, the reverse current which I am getting depends on minority carriers, not majority carriers. Okay, that means the current, the change in current can be easily observed when we connect in a reverse bias. If we connect in a forward bias, light will fall, the electron hole pairs will create it, but that will not show the considerable change in the forward current, because the forward current is due to majority carriers, not minority carriers. Clear? Class? Okay. Now this is all about the photodiode. This is small topics. Okay. तो photodiode का कुछ और मैंने बताया हुआ. What is the uses of photodiode? Photodiode का यूज क्या है? जैसे हम मान लो मैं मुझे ना एक कबर्ड, जैसे हम लोग कबर्ड बोलते हैं, कबर्ड में जब दरवाजा खोलूंगा तो लाइट जलना चाहिए. कबर्ड में दरवाजा खोलते लाइट जलना चाहिए. ये मैं कैसे करूं? तो जब कबर्ड का दरवाजा बंद होगा तो अंदर पूरा डार्क होगा. तो मान लो मैंने एक सर्किट कनेक्ट किया लाइट के साथ, इस सर्किट में लाइट लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना. तो जब कबर्ड का दरवाजा बंद है तो लाइट नहीं गिर रहा है फोटोडायोड में, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, बहुत ही छोटा रिवर्स करंट फ्लो करेगा. दैट करंट इज नॉट इनफ टू glow the bulb. Okay, now when we open the cupboard, light falls on the photodiode, and because of that photodiode start conducting and is glow the bulb. So this type of uses can be done by photodiode. Do you understand, class? What is photodiode? Now the next is, what is LED? That is light emitting diode. ये क्या होता है? Light emitting diode क्या होता है? Again, it is a special purpose PN diode, okay, which is made in such a way that when it is connected in forward bias, it emits light. जो छोटे छोटे बल्ब नहीं होते हैं हमारे दिवाली में हम जो लगाते हैं, those are LEDs actually. Okay, वो लाइट एमिट करता है. Now ये लाइट एमिट कैसे करता है, that you need to understand. And this is connected in forward bias. Only photodiode is connected in reverse bias. Okay. Why it is connected in reverse bias, we have discussed everything in detail. Now let's talk about LED. So we understand LED is light emitting diode. The name suggests the diode from where the light will emit. Okay, so what is this symbol? Symbol is almost similar. The only way is the light is going out. Okay, वहां पे लाइट गिर रहा था और यहां से लाइट निकलेगा. That is LED. Now how it works? तो ध्यान से सुनो. When we connect a PN junction diode with a forward bias, this is P region, this is N region, plus minus is connected to a forward bias. These are holes, these are electrons, these are minority carrier is hole, the minority carrier is electron. What will happen when we connect it in a forward bias? Holes will be repelling, plus hole repel करेगा. That means diffusion of holes will occur and diffusion electrons will occur. Right? Done. Now अब इसी चीज को हमें दूसरी तरीके से समझना है. ध्यान से मेरी बात सुनना. जब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा. राइट? दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्रिएट होगा. इन अदर वे अराउंड, इफ यू टॉक अबाउट बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड goes to valence band.
इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया था बॉन्ड टूट के, तो वापस आ रहा है मतलब बॉन्ड बन जा रहा है. सो दिस कोवलेंट बॉन्ड प्रोडक्शन कैन बी अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो. ठीक है. So when an electron is injected from N region to P region, okay, that is electron is a minority carrier for P region. It is injected, it produces electron hole pairs. That is considered as a covalent bond created, and that is considered as jumping of electrons from conduction band to valence band. Okay, this is nothing but transition of electrons from high energy level to low energy level. So we know when an electron transits from high energy level to low energy level, it emits energy which is equals to energy gap. So what is the energy gap? Equals to forward energy gap. तो यहां से जो भी फोटोन निकलेगा h nu, that photon will have energy Eg, और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि कितना वेवलेंथ निकल रहा है. We know frequency equals to c by lambda. So what is the wavelength of the light which is emitting, which I can understand. So this is the way how the LED works. Okay, clear? Plus, so इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमें इसको heavily डोप करना पड़ता है ताकि ज्यादा बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स हो, so that ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बने. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा लाइट एमिट करेगा, because for each electron hole recombination there is a covalent bond is creating. That can be considered as transition of electrons from conduction band to valence band, and hence there is some energy is emitted. Okay, so this is all about LED. Now you need to understand from LED few things. सबसे पहला, LEDs का ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत छोटा होता है. ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरी स्मॉल, 5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है. इसका मतलब क्या, अगर एलईडी को मैंने गलती से भी रिवर्स बायस लगा दिया, देन देयर एलईडी विल गॉन, डैमेज हो जाएगा. So we need to very precise when you're dealing with the LEDs, when you do some physics practical jobs, when you're taking a LED, when you're connecting the LED with a voltage, battery LED glow करता है. अगर गलती से भी तुमने टर्मिनल उल्टा पुल्टा लगा दिया, LED is gone. On that spot LED is gone. Clear? Okay. Next, LED का जो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज वो ज्यादा होता है with respect to normal P junction diagram. Okay, so these two things makes the VI characteristics. So the VI characteristics of LED and P junction diode is exactly same. We can write like this. Exactly same. The only difference is that one knee voltage is more with respect to P junction diode. मतलब क्या? अगर P junction diode का ऐसे करके ऐसा है, तो LED का थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि knee voltage LED का ज्यादा होता है P junction diode से. ओके, अगर P junction का diode ऐसे करके ऐसे गया, तो LED का क्या होगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, जल्दी आ जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. This is the difference between LED and a P junction diode. This question may comes in the examination. They will show you two VI characteristics. They will say identify which is an LED and which is a simple P junction diode, which is a junction diode. तो तुम देखोगे जिसका नी वोल्टेज ज्यादा है, that is LED. These things are written in page number 40. Okay, under the node, the reverse breakdown voltage LED is generally low. Then in the third point is knee voltage is much higher and different for different colors. So this type of questions may come in examination as an application based questions. Do you understand? Plus, okay, there are many other notes are written. Those things you need to mug up, like uses of LED, किस type का LED, कौन सा color light देता है. These things you know. LED का advantages, they are cheap. Okay, less energy required for the product, for the working of it. Okay. Now the last topic is the solar cell. Okay class, the last theoretical topic under this chapter is called as solar cell. Now we all are very familiar with the solar cell. We are not familiar with photodiode, we are not familiar with LED, okay, but solar cell we all know, because from childhood we see there are a few devices which can be charged under sunlight and then we can use it. Those are called solar cell. Now ये solar cell होता क्या है? It's nothing but again a special P junction diode. There. Now, before going to solar cell, तुम एक सिंपल P junction diode के बारे में बात करते हैं. चलो, एक सिंपल P junction diode में क्या होता है? At the normal condition, when the diode is created, this is P side, this is N side. These are holes, these are electrons, magnetic carriers or magnetic carrier electrons. Or in the near the junction, the P side there are negative ions, and near the junction in N side there are positive ions, which create a barrier potential.
ये मुझे पता है मेरे को पहले से ही। ओके, दैट मीन्स एक डायोड में पहले से ही कुछ पोटेंशियल होता है बेटा। ओके, 0.7, 0.6 वोल्टेज पहले से रहता है, मतलब एक डायोड पहले से एक छोटा सा सेल है। इट ऑलरेडी इज अ सेल which gives some potential difference. So एक डायोड तो पहले से ही सेल है ना, पहले से ही है, पहले से ही सेल है, पहले से ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है इसके जंक्शन के अक्रॉस। दिस वी नो एंड दैट इज वेरी पोटेंशियल, दिस वी नो। बस मुझे इसी को एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है, वो बन जाएगा सोलर सेल विद द हेल्प ऑफ लाइट। दैट्स ऑल। यही चीज है, यही पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे एक्सप्लॉइट करना है इन सोलर सेल। So if I talk about a normal p junction diode, it has some potential difference already, but that potential difference is very small. Clear? Now I want to increase that potential difference of the cell, of that p junction diode. Then it becomes a solar cell. Do you understand? So we are focused basically in this depletion layer, that is variable potential. अब देखो क्या है, तो अब मैं बात करता हूं पहले सोलर सेल के सिंबल के बारे में। सिंबल क्या है? अभी तक मैंने क्या किया था, दिस इज अ पी जंक्शन, इसमें ऐसे करके लाइट जाएगा, then that becomes photodiode. But now with a terminal plus minus, that becomes a solar cell. हो गया, पर टर्मिनल आ गया ना, that means it is acting like a voltage source. यहाँ से कुछ वोल्टेज डिफरेंस निकलेगा, that is called solar cell. ओके, अब ये सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यू विल हैव अ कैन, इस कैन के अंदर क्या क्या होगा सुन लो। सबसे पहले एक ग्लास होगा, ग्लास सीसा, देन बिलो द ग्लास वी हैव अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी, एंड देन वी हैव अ थिक लेयर ऑफ एन टाइप। ठीक है, इस पी टाइप के ऊपर ऐसे करके एक मेटल फिंगर्स होंगे, फिंगर्स टाइप, विच आर वेरी थिन। ओके, these metal fingers are acting like electrodes. कैसे काम करते हैं ये? इलेक्ट्रोड जैसे काम करते हैं, मतलब this will be one terminal of the battery which we will get here. Okay, and there is one another metal contact here which is considered another terminal. This is the positive terminal, this is the negative terminal. P type positive terminal, N type negative terminal. Clear? Okay, and this glass is for incident of light. लाइट आराम से ग्लास के थ्रू पी जंक्शन में चला जाएगा। This is the construction of p junction diode. It is made up of silicon or gallium arsenic also. Now, next is how it works. कैसे काम करता है? तो मेरे को क्या करना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। अब देखो, इसका वर्किंग में यहां समझाऊंगा, ध्यान से देखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अदरवाइज वी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज। ये जंक्शन होंगे, यू गेट डिप्लीशन लेयर, ठीक है। दिस पी साइड, दिस इज एन साइड। तो पी साइड में क्या होगा, नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे ऐसे करके, एंड एन साइड व्हाट हैपन, पॉजिटिव आयंस विल क्रिएट लाइक दिस। ओके, सॉरी फॉर दिस कॉल। Okay, disturbances are gone. Now see, this is a normal p junction diode. Okay, this is the situation of this solar cell when there is no light is incident. Now it has already some potential difference, right? Which is a variable potential. Now what I'm doing, I'm allowing the light to enter from the top and going to the p junction. Now why the p type is thin? So that light can enter till the p junction, because p junction is the only area which I am interested in. तो लाइट पी जंक्शन तक चला गया तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होल होगा क्रिएट होगा, वो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्ज। सो देयर विल बी मोर प्लस चार्ज विल बी क्रिएटेड, और जो होल्स क्रिएट होगा वो इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो देयर विल बी मोर नेगेटिव विल बी क्रिएटेड। सो व्हाट विल हैपन, इमोबाइल चार्जेस ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जा रहा है, एंड इन दिस वे इट विल एक्ट लाइक अ सेल। नाउ आफ्टर सम टाइम कंटिन्यूस सनलाइट आएगा, ऐसे मोर और मोर इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रिएट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट हो गया। ओके, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इधर जा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कहां लिखा हुआ है, आई एम टेलिंग यू, you have to understand what is the book is like, how you to understand in theory ways. See,
वर्किंग के अंदर सेकंड लाइन पढ़ो. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंक्शन फील्ड. ओके. द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द एन साइड ऑफ द पी जंक्शन. द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द एन साइड ऑफ द पी जंक्शन. क्यों? क्योंकि ये प्लस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके. एंड द फोटो जनरेटेड होल मूव्स टुवर्ड्स पी साइड ऑफ द पी जंक्शन. द फोटो जनरेटेड होल्स मूव्स टू द पी साइड ऑफ द पी जंक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. Clear? They will collect at the two sides of the junction, giving rise to a photovoltaic pit. They are collected at the two sides of the junction. Now, ये कलेक्शन क्या, कैसे हुआ कलेक्शन? तो कलेक्शन मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे वहां पे एक ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो होल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये इधर चला गया, ये होल हुआ इधर करा, कॉम्बिनेशन होगा अगेन इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ. ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ चला गया, ठीक है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाएगा, एक एटम होगा इधर. You understand? उस एटम में एक होल था, उस होल में वो चला गया, तो वो होल इधर शिफ्ट हो गया. The shifting of transition will be happening. So ये कैसे हो रहा है, किस तरह से, डिटेल we don't need to study all those things in detail. We only need to understand कि क्या हो रहा है. So ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है. Okay, because of that electrons is going there, holes are going there, and because of that immobile charges are increasing, and hence potential difference is increasing. And now the solar cell has some potential difference which we can use as a battery, as a cell. In this way, the whole solar cell works, and in this way we can produce a solar cell also. Now, next, if we study VI characteristics of a solar cell, इसके बारे में ध्यान से सुनना. ये कैसे होता है? This is the VI characteristic. For example, this is V and this is I. अब अच्छे से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? सोलर सेल को मैंने पूरा चार्ज कर दिया, ठीक है. अब मैं जहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया, तो वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा ना, दैट इज VC, ओपन सर्किट वोल्टेज. सर्किट नहीं लगाया हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है. ओके, दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज देयर, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज. ओपन सर्किट voltage. What does that mean? Voltage across the solar cell when it is not connected to any circuit. When it is not connected to any circuit. Okay. Now, when I connect it to a circuit, slowly those energy, the electrical energy which is created, energy create हो रहा है नहीं? वोल्टेज मैं सनलाइट को, मैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो जो एनर्जी क्रिएट हुआ, जो वोल्टेज क्रिएट हुआ, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा. सो धीरे धीरे करंट फ्लो करेगा. सो व्हेन आई कनेक्ट दिस टू आवर रेजिस्टेंस, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ओके, स्लोली वो करंट फ्लो कहां से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जब करंट निकलता जाएगा, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा. तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटता गया, देखो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड IS. जब ओपन सर्किट वोल्टेज पूरा खत्म हो गया, तब जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा इन द सर्किट. द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, दैट इज क्लोज सर्किट करंट. डू यू अंडरस्टैंड? ये क्लोज सर्किट करंट कौन सा है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? तो ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सा है? सेल, सोलर सेल मेरे पास आ गया, मैंने उसमें बैटरी वोल्टमीटर लगा दिया. व्हाटएवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी आर गेटिंग, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज. ओके, अब जब इसको मैं रेजिस्टेंस पे लगाऊंगा तो क्या होगा? स्लोली द चार्ज विल डिस्चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिस्चार्ज, स्लोली द पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिक्रीज, एंड एट द सेम टाइम द करंट विल इंक्रीज स्लोली. ठीक है ना? करंट जितना बढ़ेगा उतना इसका एनर्जी गायब हो रहा है, और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू हियर. डू यू अंडरस्टैंड? सो पोटेंशियल डिफरेंस विल स्लोली डिक्रीज and the current will slowly increase. So this is called VI characteristic. Now the question is, why it is in fourth quadrant? इसको तो मैं ऐसे ही बना सकता था. ये भी तो बता रहा है कि वोल्टेज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है. ये भी तो बता रहा है. तुम इसको ऐसे ही क्यों दिखाया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों दिखाया? रीजन इज दैट ये जो करंट जा रहा है, ये करंट डायोड से फ्लो होता है. ये डायोड से फ्लो नहीं हो रहा है, डायोड से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, डायोड से करंट निकल रहा है. That's why. That means the current is not drawn, not going into the diode. The current is drawn from the diode, and this is the reason it is in the fourth quadrant. Okay, class. So this is all about the solar cell. Now one more thing. If someone say you in a solar cell, draw the graph of intensity of sunlight or intensity of sunlight versus current. Okay, intensity of sunlight. See in the page number, last page number 15 number. Okay,
electric current versus intensity of sunlight. When there is no sunlight, then also we'll get some amount of current. Why? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल, वेरी पोटेंशियल होता है ना शुरू में, हर डायोड में कुछ ना कुछ वेरी पोटेंशियल होता है. That means some amount of current will flow. That is when there is no sunlight, intensity of sunlight zero है, then also we'll get some amount of current. उसके बाद more and more sunlight में डालूंगा, more and more charge separation will create more. The Bayer potential will increase more and more. That means the current will also increase more. That's all. Okay, class. So this is the, and then after we have use of solar cell, that we will study on a moon. And this is the end of this chapter class. The theoretical chapter part is there. Now next video we'll discuss about few numericals with conceptual problems related to diodes and all. Okay, that's all class. Thank you very much.